So good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Can you hear me, guys? Please write yes in the chat. Okay, great. Thanks for the confirmation, guys. So welcome everyone for the afternoon expiry session. We have the Nifty expiry today, and today's expert will be none other than our Arpit sir. So let's wait for Arpit sir till he join us and give the outlook about the market. आज मार्केट में तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, कौन से सेक्टर में फोकस करना है, किस पे हमें BTST मिलेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट फिन निफ्टी के कौन से स्ट्राइक में हम लोग फोकस करने वाले हैं, सारे चीजें अर्पित सर आपको बता देंगे. So let's wait for Arpit sir, and just to give and small overview, हमने सुबह 2 इंट्राडे ट्रेड्स दिए थे. एक था केन्स टेक्नोलॉजी और एक था CDSL. So guys, if CDSL और जो भी हमने इंट्राडे दिया, if it's stuck in a range, please make sure you maintain a strict stop loss. जो भी हमने दिया है and hold it. We can expect a upside momentum. किरण जी, हमने सुबह ही इस क्वेश्चन पे कवर कर लिया था, which IPO is best. जैसे कि आज सुबह 11 बजे PN गाडगिल का IPO का लिस्टिंग हुआ है. तो जैसे कि अभी कल भी हमें बजाज IPO का, हाउसिंग फाइनेंस का IPO भी देखा, अगर जिन लोगों को भी IPO अलॉटमेंट नहीं मिला है, so make sure you know just for the swing part or for the delivery part, अगर आपको छोटे से अपसाइड पे अगर के लिए मोमेंटम चाहिए, आप कोई भी दूसरे हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स में देख सकते हो. उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको अपसाइड एक मोमेंटम मिल जाएगा. So make sure you do this every time. So we have Arpit sir. Great. We have Arpit sir with us, guys. Yeah, very good afternoon, guys. Just setting up the frame. Just give me a minute. Arpit sir, you're on mute. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah, just give me a second. I'm just setting up the frame. Just give me a minute. Sure, Arpit sir. विनीत जी, just be patient. FINNifty में आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, सारी चीज आपको अर्पित सर बता देंगे. So just be patient for more couple of minutes. Let him just set his screen and chart and everything. We'll cover all your questions. So very good afternoon, guys. I just want to confirm the screen is visible. Yes, it's absolutely visible. Perfect. So good to go. Very good afternoon, guys. Welcome to FINNifty expiry play. So before starting with FINNifty, just want to give an update on Nifty and BankNifty, as they are the main key headline indices. So Nifty is consolidating at new blue sky zone territory. Though there is no major momentum, but still the good part is that Nifty is holding about 24,300, 350 zones from past couple of days. कल एक नए fresh life highs मारे थे Nifty ने, और आज एक consolidate कर रहा है. साथ बाई साइड अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो पिछले ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज में हमने अच्छा स्विंग देखा है फ्रॉम लोअर लेवल्स. नाउ कमिंग ऑन द लेवल वाइज, 24, 25, 200, 250 इज अ मेजर सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी. अपर बैंड में 25,500, 25,600 एक अपसाइड हर्डल जोन है. अगर इसी के साथ हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, सो निफ्टी बैंक रिलेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में. हालांकि अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें तो देयर इज नो मेजर स्विंग. But still, if we see overall setup wise, I'll just go to the daily time frame. So if I see the daily chart for BankNifty, slowly, steadily the move is upside. We have seen almost a rally of 1,000 points in last almost 1 week, but momentum काफी slow है. So generally, जब भी momentum slow रहता है, it becomes difficult for the option buyers to play the swing. Immediate basis पे the good part is that BankNifty is holding about 52,000 levels, mainly because ICICI Bank and BankNifty is HDFC Bank is holding. जिसके वजह से BankNifty is also holding about 52,000 levels. So on immediate basis, 51,900 is the major support zone for BankNifty. Upper band में 52,350.
and 50 to 500 is the resistance zone for Bank Nifty. So overall, price positive है, but consolidation हो रहा है since morning. Now coming to the expiry, today's FINNifty expiry. So we'll talk about FINNifty. FINNifty, if we see, is trading near life high territory only. But पिछले 2 से 3 दिनों में FINNifty एक रेंज में फंसा हुआ है. I hope my voice is clear, right, Avinash? Yes, sir. Yes, sir. It's your. Okay. Yeah. So FINNifty अगर देखें तो पिछले 2 से 3 दिनों में एक रेंज में फंसा हुआ है. नीचे 23,950 का सपोर्ट है और ऊपर में 24,050, 24,080 का हर्डल है. If I go for a 15-minute time frame, सुबह से एक रेंज में है. नीचे 23,950, 23,920 एक सपोर्ट जोन है. अपर बैंड में 24,050, 25,080 हर्डल जोन है. So एक बहुत lackluster मूव है, especially on the expiry day for FINNifty. Almost 70 to 80 points की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. Morning tried couple of swings for the call side, but there is no major swing so far happening. But immediate levels wise के बारे में बात करें, 23,950 एक इंट्राडे मेजर सपोर्ट है FINNifty में और ऊपर में 24,050. So इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है. अगर आपको इंट्राडे चार्ट्स विजिबल है डेफिनेटली, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 3.5 आवर से यही रेंज प्ले आउट हो रही है. होल्ड कर रहा है. ट्रैक कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. 49 के अराउंड चल रहा है. 48 इज अ प्राइस. अभी 45, 48 की रेंज में चल रहा है. इमीडिएट बेसिस पे जब तक 23,950 के ऊपर रहेगा, हमारा बाइस पॉजिटिव रहेगा फॉर FINNifty. बट हमें ये भी देखना है कि ऊपर भी हर्डल है 24,030, 24,050 के रेंज में. So 23,950 कॉल वी आर ट्रैकिंग. Right now it's quoting around 48-50 levels. उसी के साथ हमने 24,050 का पुट भी देख रहे हैं, वो भी 50 to 53 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. अगर डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें, सो VWAP $23,950 का कॉल FINNifty वे ट्रैकिंग. इट्स कोटिंग अराउंड 47, 48 पॉइंट्स, 48 लेवल्स. उसके साथ हम 24,050 का पुट भी ट्रैक कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मोमेंटम है कि नहीं. सो वी आर ट्रैकिंग एंड डेफिनेटली विल अपडेट जैसे सेटअप बनता है. एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ICICI बैंक होल्ड कर रहा है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर बैंक्स एक साइडवेज ही है. सो वी हैव टू क्लोजली वॉच ICICI बैंक एंड HDFC बैंक फॉर एनी मेजर सेटअप. So in the meantime, what we can do is levels हमने share किए हैं, strikes हमने share किए FINNifty की. Right now it is trading exact at 24,000 level itself. So 24,000 एक important level है जो हम देख रहे हैं. Over activity भी वहाँ पे maximum है. We'll wait for the setup. Levels के बारे में I'll just update. 23,950 का कॉल भी चल रहा है, 48, 49 का अराउंड. इसका इंट्राडे सपोर्ट अराउंड 35 का और अपसाइड में 65, 70 का हर्डल है. So we'll wait for the setup. In the meantime, we can take few stock queries, Avinash, and as and when we get the BTST ideas also, we'll update on the same. Great, great, Arpit sir. So, sir, सुबह हमने actually 2 intraday call दिया था. So I'll just Yes. share you the levels and stock name. Yeah. Could you please update on that? It We was had first one was intraday. CDSL, right? Sorry. First one was CDSL. Yes, the first one was CDSL. We bought it at around 1458 levels for the target of 1500. Okay. Yeah. 1500. ठीक है. So the good part is that market के डलनेस के बाद भी the stock is holding
साइडवेज हो गया है, बट आई थिंक बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 1420 1400 लेवल्स के अराउंड. सेटअप पॉजिटिव है ओवरऑल. एक्सचेंजेस में एक अच्छा इंटरेस्ट है, सो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड. 1415 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू टू होल्ड फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 1480 1500 लेवल्स. अगर किसी का पोजिशनल व्यू है, सो यहाँ पे हमारा 1380 का. अपसाइड में धीरे धीरे हमें 1550 1600 तक के लेवल दिख सकते हैं. Okay. And Abhinay, which was the second stock? It was Cage Technology. We mentioned to buy it around 5388 levels for So 5500. Yeah, around 5380 levels, right? Right, 88. 5380, yeah, so around 5400 levels. So the stock is very strong on all time frames, whether it's monthly, weekly or daily. Daily में भी higher rise है, उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. मार्केट के डलनेस के बाद भी वो अपने स्टॉक को गेन्स को काफी होल्ड किया हुआ है. सो सेटअप वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है. ओरिजिनली हमें यहाँ से 6000 तक का लेवल दिख रहा है. इमीडिएट बेसिस पे 5300 320 का स्टॉप लॉस रख के आप कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. ऊपर में 5600 650 तक का मूव दिख सकता है. सेटअप वाइज काफी पॉजिटिव. I hope you guys have got the answer for the morning intraday trade. So let's move ahead with the stock queries, Arpit sir. Yeah, just to add to that, I want to add a couple of ideas that are looking good, because as you've seen, there is no major swing in option buying trades, but at least stocks में जो opportunity है, हम why to miss out that. And originally, so we are quite bullish on selective sectors. So first is from the telecom space itself, Bharti. So भारती का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मंथली वीकली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है. डेली सेटअप भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. Trading at life high territories. So positionally from 1 to 2 months perspective also, and from 15 days perspective also, Bharti is one of our preferred pick within the telecom space. 1650 1660 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 1620 का स्टॉप लॉस रखिए. ऊपर 1700 1730 के टारगेट के लिए. इसी के साथ हमें दूसरा जो हमारा फेवरेट पिक है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी. We have been quite bullish on the counter, and if you see, trend is your friend, and classical we have seen recovery from 50 DEMA. वीकली स्केल पे फ्रेश रेंज ब्रेकआउट दिया 13500 के ऊपर. सो आई थिंक फ्रॉम ईयर और ऑल्सो 1 महीने 2 महीने के व्यू के हिसाब से हमें 15000 16000 तक का लेवल दिख सकता है. कीपिंग इन माइंड ये सब पोजिशनल लेवल्स में बोल रहा हूँ. सो थोड़े स्टॉप लॉसेस भी बढ़े रहेंगे, बट भारती एयरटेल एंड डिक्सॉन आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव. इमीडिएट बेसिस पे हमने ऑलरेडी केन्स के बारे में, सीडीएसएल के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बात किया है. जस्ट टू ऐड वन मोर स्टॉक, डोम्स. सो डोम्स में भी हम काफी पॉजिटिव प्ले आउट किए हैं. अच्छी रैली भी देखी हमने 2600 लेवल से ऑलमोस्ट 2900 तक का. आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपर के लेवल से, बट कोई भी टिप अगर आता है 2700 2750 के वहां पे, सो वापस ऐड कर सकते हैं. सो 3 स्टॉक्स फ्रॉम टेलीकॉम स्पेस, भारती एयरटेल इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, डिक्सॉन टेक एंड डोम्स इंडस्ट्री पोजिशनली काफी अच्छे हैं. BTST ideas, for the fresh ideas will update. So Avinash, in the meantime, we can just take a couple of stock queries and then we can revisit the FINNifty levels. Okay, sure. Sir, what is your view on Premier Engineering IPO? Should we hold or sell? Yeah, so Premium Engineering IPO, I think recently it got listed, right? Right. Premium Energies, right? Premium Energies, yeah. Perfect. So if we see, we just have a data of almost last 10 to 12 sessions itself. So सेटअप वाइज अगर देखें तो एक रैली देखी थी हमने 800 से लेके ऑलमोस्ट 1250 की. इमीडिएट बेसिस पे चार्ट हिस्ट्री छोटी है, सो आई थिंक लेवल्स वाइज भी हमें उसी हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा. 1100 के अराउंड चल रहा है. सेटअप वाइज 1000 का मेजर सपोर्ट है. ऊपर में धीरे धीरे हमें वापस 1150 1200 तक का मूव दिख सकता है. सो 1020 1030 एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बिकॉज चार्ट 15 दिन पहले ही लिस्ट हुआ है. सो चार्ट हिस्ट्री इज स्मॉल. Okay. So as of now, we have couple of IPOs upcoming, in this week or next week. So what do you suggest, Arpit sir, which will be the best one that our clients should look after? So generally, what is the thing right now, due to surplus liquidity and as you are seeing, we are in tremendous strong bull run. Broader market is outperforming, and if you see the IPO market also, one of the biggest, Bajaj Housing was a recent one. Then another we have the jewelry one. So as and when we are seeing there is opportunity, एक important चीज हमें ध्यान रखनी है कि उसी के साथ उसके जो peer comparison, peer companies है, उनमें भी काफी अच्छा momentum आ रहा है. So I think overall IPO market is booming really well. बट मेक श्योर दैट उसके साथ जो स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन है वो भी ध्यान रखना है हमें. अभी रिसेंटली अगर बात करें, सो कुरियर सर्विस का एक नया आईपीओ आने वाला है
और अगर मैं उसी के साथ उसके पीयर कंपनीज देखूं, सो ब्लू डार्ट एक कोरियर कंपनी है, वी हैव सीन अ मैसिव मूव, मैसिव वॉल्यूम्स के साथ। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सेक्टर की कंपनीज आ रही है आईपीओ में और उसका अगर लिस्टेड कंपनीज है, सो कीप अ वॉच ऑन दैट, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू कैप्चर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट जो सेक्टर्स डिमांड में है, जो फोकस में है, ट्राई टू प्ले दैट स्विंग। सो इमीडिएट बेसिस पे कोरियर सर्विस का आईपीओ आने वाला है कुछ दिनों में। So the listed space में Blue Dart is there and TCI Express, both are the courier companies. So I think definitely we can keep a track on these companies. Great, great. Rightly said, Arpit sir. वही हमने सुबह भी कहा था कि if you have not received the allotment of any of the IPO, make sure you keep an eye on the sectors accordingly. You know, so हमें कहीं ना कहीं ये सब sectors में momentum भी दिख जाएगा. Yeah. And just to add one more thing, I'll just revisit the FINNifty because हम stocks के बारे में तो काफी बात कर ही रहे, but ऐसा नहीं हो कि अगर momentum रहे, so back to FINNifty, back to its number of 24,000, VWAP भी वही है, call हुआ put हुआ concentration भी वही है। अगर मैं call भी track करूँ, it is still quoting in that range 45 47 से लेके 52. So I have, along with the screen, I have other screens also कि options के prices हम continuously monitor कर पाए, but as of now there is no major momentum. Stocks में हमने भारती, Dixon and Domes discuss किया from a positional level, and along with that BTST ideas will definitely update कि जैसे setup रहता है हम update करेंगे। एक नया idea that we have, first conviction delivery idea is we have flash on terminal DCI system, that is 345 अभी rate चल रहा है उसका। I'll just open up the chart also, because there is very good action in stocks. So 345 346 is the rate that is quoting around, and I think daily scale पे एक bottom fishing idea है, so reversal bet रहेगी। 346 347 की closing के ऊपर जल्दी हमें move दिख सकता है towards 360 365 level. So one more conviction delivery idea, that is DCS systems, 318 का stop loss रख के ऊपर 365 375 के लिए conviction delivery idea. We have flash on terminals also, and I think definitely it's visible to everyone. So just to correct once again, Arpit sir, the conviction idea is DCX India. DCS systems, yes, the rate is 346. Okay, and the rate is 345 346 with a stop loss of 318. We have to look for a target of 365 and 375, right? Yes, perfect. And we also believe, as market is providing tremendous opportunity in stocks, so why not to make the most of it? So that's why we are continuously updating about the stock ideas also, and revisiting the FINNifty levels also. If you see, it is trading near its 24,000 levels. Since morning, we are trying to find trades apart from the 945 tick. It's totally lackluster. So I was there on the page also for the Stockholm page. Couple of people asked also for 23,950 call, but as we already mentioned, this momentum is missing. So better to exit and take some losses जो किसी ने trade सुबह लिए थे. But as of now, we are still visiting that trade. We are tracking that trade. कोई भी opportunity रहेगी, कोई भी trade setup बनेगा, we'll update on the same. Avinash, we can take out few stock queries, and then we can definitely have a look again. So, Arpit sir, what is your view on Zomato? Do we have any fresh entry opportunities as of now? Yeah, so Zomato has been one of our preferred pick from past almost couple of months itself. And if we see the setup wise also, we have been quite bullish. Fresh monthly breakout हमने देखा था 220 levels के ऊपर, and recent में भी हमने एक अच्छी रैली देखी 50 डेमा से रैली हो गई from 240 to 285 levels. Right now daily setup पे थोड़ा pause में है, but positionally setup is very strong. कोई भी dip अगर आता है 260 265 के levels में तो बाय कर सकते हैं। 245 250 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर धीरे धीरे 295 320 के लिए बाय कर सकते हैं। सो इट्स अ पोजिशनल लेवल्स, इमीडिएट बेसिस पे 265 would be a good entry point. So, I'll answer this query. Nishan Kothari, that while giving stock query, don't you get disturbed in option tracking? So, our expert have two terminals in the front of them, जहाँ से एक चार्ट से हम आपके स्टॉक्स को क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, और दूसरे टर्मिनल पे वो पैरेलली ऑप्शंस के ट्रेड स्ट्राइक्स को ट्रैक भी करते हैं. Right. How exactly our experts do, right? कि हमें हमारे स्ट्राइक्स भी हम लोग अपने
सर ट्रेड ना मिस करें एंड पैरेलली हम आपके क्वेरीज को भी एड्रेस करते रहे. सो HAL bought at 4450. What is your view on that? HL bought at 4450. 4450. Right. So if you see over the defense theme, the shipping stocks has been in lackluster for last almost 1.5 month, and ये pain हम देख रहे हैं कि overall technically also देखें तो momentum is missing. Daily scale पे देखा जाए तो it is trading at its major support zone 4400 levels. 4400 की अगर क्लोजिंग नीचे आती है तो हमें 3 to 4% और डीप कट दिख सकता है towards 4200 levels. So I think chart wise we should wait for any reversal. अगर कोई पोजीशन ऑलरेडी फंसी हुई है तो आप 4420 का लेवल देखें, उसके नीचे क्लोजिंग आती है, बेटर टू एग्जिट इन लॉसेस बिकॉज द सेक्टर इज नॉट इन फेवर, मोमेंटम इज मिसिंग, there is no worries, better to exit in some losses and try to shift the capital to some better trending stocks. Great. Your view on Nykaa bought at 204 level, having 250 shares. What should I do? Should I Nykaa, right? So Nykaa, if I see the overall setup wise, it has given a range breakout above 180 190 levels, but पिछले 10 से 15 दिन से हम देखें तो ऊपर से करेक्टिव फेज में है, 230 से करेक्ट होकर अराउंड 200 आ गया है. So I think ये जो सपोर्ट जोन है, it's trading near its support zone 195 194 levels. So I think we can revisit the stock near 193 194 levels. वहाँ पे कैसे बिहेव करता है. Currently एक डाउन ट्रेंड में है, नीचे अगर 190 192 के अराउंड आता है तभी हमारी बाय करने की सलाह रहेगी. एज एन सेटअप ओवरऑल मिक्स है. And also in the meantime to revisit the FINNifty levels, it has got stuck at that level itself. If you see the setup wise, 24,000 has been a kind of a mark. If you see the VWAP wise also, OI data wise also, there is no major swing. हम कॉल भी पैरेलली ट्रैक कर रहे हैं तो 47 48 ही चल रहा है. अभी भी पुट भी हम ट्रैक कर रहे हैं फॉर 24,050. एंड ऑनेस्टली इफ वी सी ऐसा लग रहा है स्क्रीन भी एक बार पॉज हो गई है. मतलब देयर इज नो रियली चेंज इन द प्रीमियम्स सिंस मॉर्निंग. वी हैव बीन ट्राइंग अ लेवल बेस्ट बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर स्विंग. कोई सेटअप रहेगा तो हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे. इमीडिएट बेसिस पे 24,050 एक हर्डल जोन है और नीचे 23,950 एक सपोर्ट जोन है और उसी के परफेक्ट रेंज में ट्रेड आउट प्ले आउट FINNifty हो रहा है. Okay. Your view on Gandhar? View on Gandhar oil? Right. Yeah. So I think this stock, if we see the setup wise, let me just check the weekly setup and daily setup. Overall, the stock is in downtrend. No major follow up is seen. 230 एक major hurdle zone है, नीचे 210 200 का support zone है. I think better to avoid. अगर कोई position फंसी है, so better to exit on bounce near 222-25 levels. There is no major swing. There is no major momentum. Better to exit the stock on bounce. So Arpit sir, Manish ji have a Tata Motors share at 1000 levels. What exactly he should do? Should he hold So on? if it's an investment bet, so definitely continue to hold. Overall setup wise देखें तो momentum missing है टाटा मोटर्स में, but 960 940 950 एक major support zone है टाटा मोटर्स के लिए. जब तक इसके ऊपर रहता है there is no worry. अगर थोड़ा सा dip अगर आता है around 930 940 के levels के around, so definitely you can add Tata Motors. But immediate basis पे trading setup wise में there is no major momentum. So better to wait. थोड़ा सा dip अगर और आता है, can add fresh at lower levels. Titagarh, so another railway theme, and once there was really good momentum in the stocks, but post that we have seen a corrective phase in last almost 2 months. And if we see the setup also, clearly a cut of almost 500 points from all-time high levels. Immediate basis pay, it has given a fresh breakdown, forming lower as low lows on weekly scale. I think we should wait for any setup trading downwards. Next support आता है around 1250 1220 levels. So I think better to wait. अगर position फंसी है guys, please don't try to average it out. Never try to average a falling counter. Wait for some bounce and try to exit the stock on bounce near 1350 1380 levels. So any update on the FINNifty strikes? Yeah, just a second. I'm just
rechecking it. So already we have seen it is trading near its 24,000 VWAP level itself. And if we see the intraday chart also, let me just revisit. There is no major momentum on daily scale on 15 minutes chart forming lower as lower lows. There is no as of now major momentum is creating. Call भी अगर हम देखते हैं, so आप लोग भी अगर definitely call track कर रहे होंगे तो around 48, 49 था, अभी वो 42, 43 हुआ है. उसी के साथ अगर put भी हम देखें 24,050 का, it is 57, 58. 4 to 5 points move we have seen in put and 4 to 5 points corrective we have seen in call. But there is no major setup as of now. That's why we have not been aggressive on it. अगर definitely aggressive setup रहता तो हम definitely would try to push it. But as of now there is no major setup and we'll wait for the setup. But in the meantime we have already discussed a lot of stock ideas, a lot of stock opportunities. So guys, try to make the most from it. BTST idea will definitely update in the market. Also, one more thing I would like to update. Today and tomorrow we have Fed event, the Fed meet. That is going to take a decision of the interest rate cycle going forward. So guys, keep in mind this is a very important event, and likewise it will definitely have impact on the markets also. So keep that thing in mind. That is very important. Also, so far there is no major momentum for option buyers. So that's why we have been little bit on the back seat for the option buyers. अब तक काइंड ऑफ एक ऑप्शन सेलर का ही दे रहा है. थोड़ा सा हमने कूल ऑफ देखा है FINNifty के कॉल में, but at the same time as we are heading closer to the 3 p.m. so the chances reduce drastically, and still we'll wait for the setup. कोई भी setup रहेगा हम definitely update करेंगे. Okay. What is the view on NBCC bought at 190 level? Should I hold View it? on NBCC. NBCC, right? Right. So NBCC, if I'll check the chart wise, let me just check the daily and weekly time frame. So NBCC also the bigger trend is positive, but it has been sideways back to its major support zone from 210 levels. So I think risk reward wise यहाँ पे काफी favorable है. 170 का stop loss रख के आप hold कर सकते हैं. ऊपर वापस हमें 185, 190 तक का swing दिख सकता है. So major support zone के पास में है 170 to 173. So better to add at current levels. And धीरे-धीरे हमें uptick दिखे तो वहाँ पे आप book कर सकते हैं. Your view on Adani Wilmar. Adani Wilmar. Right. So Adani stocks are also overall as a sector, if you see, it is really in downtrend. Adani में Wilmar के बारे में बात करें तो स्टॉक एक मेजर रेंज में ही है. नीचे 340 का सपोर्ट है, ऊपर 380 390 का हर्डल है. Nothing great on the setup wise, chart wise. So I think we should wait for any stability in this counter. 390 के ऊपर ही कुछ setup change होगा. तब तक एक lackluster to negative to range bound counter. Okay. So we'll take 2 to 3 more stock calls, Arpit sir, unless we have a BTST, or else we'll sum up the session. Sure. So Atulji bought sale at 164 level. What exactly he should do? Should he hold us? He bought sale at what level? 164. 160. So overall, if you see, the metal pack has been the underperforming sector, and especially sale has been the biggest underperformer. If you see overall, the PSU stocks has been the lackluster for the last couple of weeks itself. अगर सेल के बारे में बात करें हम, so एक इसका मेजर सपोर्ट है अराउंड 125 126 के अराउंड. डेली के पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, बट इसका कंफर्मेशन अराउंड 136 के ऊपर ही आएगा. सो आपने ऑलरेडी आप ऊपर के लेवल पे फंसे हो 160 के लेवल पे. So I think we advise कि better you can average out at current levels. आप stop loss ध्यान रखिए 125 का. So धीरे-धीरे up move भी आता है तो आपकी costing reduce हो जाएगी and you can sell it out near 140 142 levels. Great. Your view on ONGC? View on? I guess ONGC we have covered it, right? No, ONGC so far in this session we haven't covered. Okay. So we'll just give a quick update on that. Similar, it is in downtrend. So overall, ONGC also, if we see, it's stock corrected from 330 levels to 290. Sideways, immediate it's supported to 80-85 का, but momentum is missing. So I think ये भी एक PSU basket के हिसाब से downtrend में ही stock 280 का support है, ऊपर 305 का hurdle है. So sideways to negative bias. Okay. Arpit sir, what do you think? Zomato will fill the gap of 245 level?
If I see the setup wise on the daily basis, the chances are low because overall we have multiple supports near around 260, 262 levels, 255 levels. So the chances are a bit low. जब तक ये 260 के ऊपर रहता है, 260, 262 के around, a bias would be positive, and any dip would be a buying opportunity in Zaman. Great. So this will be the last query, Arpit sir. Before we go, move with the last query, do we have any BTST with us as of now? So right now, actually, the thing is, overall, if you see the market setup wise, there are barely intraday major opportunities. Positional ideas we have already discussed. But just to give an update also, I think better to go with large cap itself, or along with that, we can go with Dixon. So I think Dixon is still a good bet to play on. So BTST idea and from a positional idea also, we can go with Dixon. Dixon आप buy कर सकते हैं, 14,100 अभी भाव चल रहा है. आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 13,900 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 14,300 और 400 के टारगेट के लिए. ओरिजिनली भी हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में डिस्कस किया था. सो वन BTST आइडिया दैट इज Dixon Tech. 1390 would be stop loss. On the upper band 1430, 14,400 would be the target. Okay. So this will be the last query, Arpit sir. Your view on IRFC. Yeah, and just one more thing, one more idea that is looking good on screen and we have seen on intraday chart also. Dixon we have already shared. Another is VBL, that is Varun Beverages. So Varun Beverages, if we see the setup wise, परसों हमने काफी सेलिंग देखी थी, but आज एक strong recovery देखी. And last hourly chart में भी हमने एक अच्छा recovery देखा है. So VBL also we can go with the BTST. 643, 645 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 625 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 675, 680 के टारगेट के. Great. So guys, we will pin it in the chat box. So Arpit sir, could you please confirm the Dixon levels? I'm repeating it once again. Sure. Buy Dixon at current market price with a stop loss of 13,900. Target for the upside will be 14,500. Perfect. Great. And the same for VBL will be buy near the current market price, stop loss of 625, and the upside target of 675, then 680 levels. Yes. Great. So that's it, guys, from our end. We tried our best to have a trade in options into index, but due to its completely sideways momentum in the market, हमें मिल नहीं पाया. But जैसा हम हमेशा कहते हैं, no trade is also a trade. Saving your capital is better than loss, right? So thank you Arpit sir for having a great session. हमने 2 BTSTs दिए. Also हमने जो सुबह इंट्राडे दिया उस पे भी हमने बात किया, and we covered a lot of stock queries. So thank you guys for joining. Also make sure guys we have a crude expiry in the evening with our expert Ashish Rajodia, and he is the only person जिसने हमें back to back काफी सारे profitable sessions दिए in crude oils, right? So make sure you also join the session of crude oil expiry at 6 PM in the evening. So thank you guys for joining. Thank you Arpit sir. Thank you all. See you all tomorrow.